So page number 119 and question number 7. Journalize the following transactions, post them into ledger in February 2019. So it is a journal of Sunil. कहाँ पे दिया है? Look at the first transaction. You can understand thereby. Okay. So it is journal of Sunil for the month ended February 2019. The transactions are given to you. First of all, we are going to pass the entries. Here, 3 entries are different. These entries थोड़ा अलग है. Okay. So I will take a proper time to give the explanation for that. Okay. So number 1, first of all, Sunil started business with stock of goods 20,000, cash 1,70,000. Out of which 50,000 borrowed from his friend Kedar at the rate 10% per annum. वो 10% per annum का कुछ नहीं करना है, because that is interest. That interest will be charged in future, not now. अब देखो उसको जो कैश है ना 1,70,000 वो टोटल अमाउंट है, जिसमें 50,000 उसने बोरो किया है केदार से, मतलब खुद का कैश कितना है 1,20,000. ओके. So the first entry is to be taken in this way: cash account debit 1,70,000. Stock of goods account debit. Stock of goods account debit. It is 20,000 rupees. Okay. कैपिटल अकाउंट. अब इसका कैपिटल कितना होगा मैं आपको बताता हूँ. खुद का कैश 1,20,000 है और स्टॉक ऑफ गुड्स है 20,000 रुपीज. ओके. सो एक्चुअली हिज कैपिटल इज 1,40,000 रुपीज एंड लोन फ्रॉम केदार it is 50,000. मतलब कैश जो है 1,70,000 वो कैसे है 1,20,000 our own cash and 50,000 is a loan taken from Kedar. So cash account debit 1,70,000, stock of goods account debit 20,000, to capital 1,40,000. Our own cash 1,20,000 plus stock of goods, and to Kedar's loan, okay, or loan from Kedar 50,000. Narration. Being business started with cash and stock of goods and loan taken from Kedar at the rate 10% per annum. At the rate 10% per annum, PA per annum, PA. Now fifth. Placed an order for goods 7,000 with Mohan, for which advance of 5,500 was paid. Very important, your attention required. Placed order का entry होता नहीं है. There is no journal entry when the order is only placed, because that is not transaction. वो ये transaction नहीं हुआ ना. हमने किसी को बोला अब भाई तू मुझे 7,000 का माल दे दे, म्हणजे तुम्ही कोणाला तरी ऑर्डर दिली आहे मला 7,000 रुपयाचे गुड्स परचेस करायचे आहेत. काय ट्रान्झॅक्शन आहे का? याला एंट्री पास नाही होणार. पण इथे काय होणार माहिती का? ऍडव्हान्स इज गिवन टू मोहन 5,500. एडवांस गिवन टू मोहन मीन्स कैश इज गिवन टू मोहन 5,500. उसका एंट्री जरूर पास होने वाला है. मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट 5,500 to cash. Mohan's account debit to cash account 5,500. म्हणजे आपण मोहनला ऍडव्हान्स मध्ये पैसे दिलेले आहेत. ते काय त्याला एंजॉय करायला दिलेले नाहीत पैसे. इट इज गिवन ऑन अकाउंट ऑफ परचेज. बाद में परचेज मतलब जो जब वो डिलीवरी करेगा हमको
तो उसमें से 7,000 में से 5,500 हम दे चुके हैं. Narration. Being order placed with Mohan, order placed with Mohan, order placed with Mohan for goods and advance paid. Then 9th February, purchase stationery for office use. Simple entry, stationery account debit to cash. Stationery account debit to cash. And the amount of stationery purchase is 4,500. Narration. Being stationery purchased. Being stationery purchased. Now look at the next, please. This entry will be a different entry. इथे ही एंट्री वेगळी आली, मतलब एडवांस का एंट्री आपने पहली बार देखा है कि अलग था. अब नेक्स्ट एंट्री भी थोड़ा सा अलग आने वाला है, लेकिन आप कोशिश करो. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सॅम्पल, याची आपण एंट्री नेहमी काय पास करतो? नॉर्मली व्हॉट इज द एंट्री वी आर टेकिंग? बोला. ऍडव्हर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट. करेक्ट आहे, अशी एंट्री पास करतो. पण आता आपण असं करू शकत नाहीये, नहीं करू शकत. हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमने कुछ परचेस किया ही नहीं है, हमारे पास कुछ परचेसेस का है ही नहीं है. तो हम लोग कहां से करेंगे अभी? We will do the distribution from stock of goods. Stock of goods है ना आपल्याकडे, stock of goods account, वहां से देंगे. तो entry on 12th February is advertisement account debit. Advertisement account debit rupees 2,000 to stock of goods account because we don't have new purchases. हमारे पास नया परचेसेस नहीं है, इसलिए हमने हमारे पास जो गुड्स था वहां से अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सर. यस अदिति बोल. सर गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड एज ए फ्री सॅम्पल अकाउंट येणार नाही का? नाही, त्याची आवश्यकता नाही आहे, बिकॉज वी आर डुईंग फ्रॉम स्टॉक ऑफ गुड्स. म्हणजे तशी एंट्री कधी पास करता येते माहिती का? जर तुम्ही काही ऑलरेडी परचेस केलं असेल तर. तुम्ही काही परचेस केलं का आतापर्यंत? आत्ताच तुम्ही बिझनेस चालू केला, नवीन काही परचेसच नाही केलेलं. मग तुमच्याकडे गुड्स कुठल्या फॉर्म मध्ये आहेत? स्टॉक मध्ये आहेत ना, बरोबर. पण त्यातनं आपण डिस्ट्रीब्यूट केलं, म्हणून ती एंट्री अशी पास झाली. फार इम्पॉर्टंट आहे, याला आपण स्टार करून ठेवा. पुट अ स्टार फॉर दिस. Narration. Being goods distributed as a free sample. Goods distributed as a free sample. अभी 17 तारीख देखो, ये भी कुछ अलग ही है. पेड फ्रेट. फ्रेट मैंने कहा, फ्रेट मतलब एक्चुअली रेलवे फेयर. ओके, जो हम लोग गुड्स कैरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. So railway fare, that is called as a freight. Okay, for carrying goods. Paid freight 400. But what is given next on behalf of Dev? एक देव करके है, उसके लिए हमने फ्रेट का पेमेंट कर दिया. By the way, freight is not our expenditure. फ्रेट हमारा खर्चा नहीं है, वो देव का खर्चा है. तो हमने देव के लिए खर्चा किया है. So it is not our expenditure. So here we are doing the payment on behalf of Dev. So entry is a Dev is getting the benefit. Dev account debit to cash. Dev's account debit 400 to cash. Note down the different journal entries in today's problem. मतलब ये एंट्री भी अलग है. When
म्हणजे मी तुम्हाला सिंपल अगदी सांगतो. समजा तुम्ही तुमच्या मित्राचं एक मूवी तिकीट काढलं, तुम्ही तुमच्या मित्राचं मूवी तिकीट काढलं तर तो तुमचा खर्च नाहीये ना, त्याचा खर्च आहे. तुम्ही नंतर त्याकडनं वसूल करता. यू आर टेकिंग द मनी फ्रॉम युअर फ्रेंड कि मैंने आपका टिकट निकाला था, आप देर से आए इसलिए मैंने टिकट निकाला, चलो मुझे पैसे दे दो, लाइक दिस. सो हियर Sunil is doing the payment of rent, but for whom? For Dev. So Dev is benefited. Dev's account debit to cash. Narration. Being freight paid on behalf of Dev. आता 24th बघा. Look at 24th. Received goods from Mohan as per order dated 5th February and settled his account. Now your complete concentration is required. सगळ्यांनी नीट लक्ष द्यायचंय. Make your eyes a football size and look at me very carefully. Okay. चला 5 फेब्रुवारीची एंट्री बघा. Look at 5th February. Transaction देखो. Transaction. Placed an order for goods worth ₹7,000 with Mohan. And what is the advance given to him? 5,500. Now Mohan is executing the order. मतलब मोहन ने अपना ऑर्डर पूरा किया. म्हणजे काय केलं आपण? काय म्हणायचं? गुड्स आर परचेज फ्रॉम मोहन. आपण मोहन कडनं गुड्स परचेज केलेले आहेत. हमने मोहन के पास से गुड्स परचेज किया है. मतलब 24 को उसका डिलीवरी मिल गया. तो यहाँ पे दो एंट्रीज होगा. पहला तो परचेसेस का एंट्री होगा. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. परचेसेस अकाउंट डेबिट 7,000 to Mohan's account 7,000. This entry is showing that we have purchased the goods from Mohan. या एंट्री मध्ये काय दिसतं? आपण मोहन कडनं गुड्स परचेज केले किंवा त्यांनी त्याचं काम पूर्ण केलं. नरेशन. Being goods purchased from Mohan. Goods purchased from Mohan. But again look at the statement given on 24. चलो अच्छी तरह से पढ़ो वापिस. Received goods from Mohan as per order, our order dated 5th February and चे पुढे वाचा. And settled his account. मतलब उसका अकाउंट हमने सेटल कर दिया, उसको हमने पेमेंट कर दिया. अब बहुत इंपॉर्टेंट है. Everybody please look here. मोहन को एक्चुअली 7,000 देना था. उसमें से हम कितना एडवांस दे चुके हैं? 5,500. So what is the balance left is now 1,500. बस वही देंगे और मोहन का अकाउंट फिनिश हो गया. क्योंकि out of 7,000, 5,500 is already paid by us. हम दे चुके हैं. Okay. तो बैलेंस देना है. So entry for that. मोहन is receiver. मोहन to cash. तो 24 को और एक एंट्री पास होना चाहिए. Mohan's account debit 1,500 to cash account 1,500. Narration. Being Mohan's account settled. Mohan's account settled. ओके. हाँ, अभी बिजनेस मतलब क्या होता है ये आपको अगले दो ट्रांजैक्शन में समझ में आने वाला है. बिजनेस में ट्रेडिंग बिजनेस कैसे होता है? यहां से ले लो, वहां बेच दो. परचेज फ्रॉम समबडी, सेल टू समबडी. परचेज फ्रॉम समबडी एट X price and sell to somebody at X plus price. That is only called as a business. That is a trading, purchasing for reselling purpose. Now look at the next step. Bought goods from Shekhar on 2 months credit for 7,000 rupees at 20% trade discount with the instruction to send them to Sagar. Okay, look here please. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई हमने शेखर के पास से माल परचेज किया है
And what is the value of the goods purchased? 7,000. So purchased from Shekhar. Purchased from Shekhar 7,000. minus 20% ट्रेड डिस्काउंट. 20% मतलब 10% पहले कैलकुलेट करो, डबल करो. 700 का डबल 1400 रुपए होता है. 1400. So what is the value of the goods purchased? 5,600. Okay. और वही माल हमने किसको बेचा है? सागर को दिया. Okay. 7,000 का ही दिया है. Don't consider this. Okay, but at 10% trade discount, मतलब 700 less. So what is the goods sold to Sagar is 6,300. Look at the next transaction for that purpose. Send to Sagar outward invoice. Outward invoice का मतलब होता है this is an invoice we are sending or bill we are sending to the person to whom we are selling the goods on credit. जिसको हम माल बेचते हैं उसको हम बिल भेजते हैं. ओके. अब हुआ झालं काय नीड ऐका. शेखर कडून आपण गुड्स 7,000 चे परचेस केले 20% ट्रेड डिस्काउंटला आणि तेच गुड्स सागरला विकले पण 10% ट्रेड डिस्काउंटला. मग याच्यामध्ये आपला प्रॉफिट किती आहे? 10% प्रॉफिट झालं ना. बरोबर. तो प्रॉफिटचा विचार नाही करायचा. बट दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ बिझनेस. Here we are going to take two entries. One entry on 27th, purchases account debit. Purchases account debit 5,600. To Shekhar, Ketar nahi. Shekhar. Narration. Being goods purchased at 20% trade discount. 20% trade discount. Okay. And now Sagar, sale to Sagar. Sir, could you repeat once again? Yeah. 6,300 to sales account 6,300. Sagar account debit to sales account 6,300. Narration. Being goods sold to Sagar at 10% trade discount on list price. List price. LIST list price. म्हणजे list price वर आपण त्याला 10% trade discount दिला. Actually, somebody requested me to repeat the explanation. Yes, I'm going to repeat. Very important. Your attention required. Please, please. चलो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ वापस. इकडे लक्ष द्या. This is the list price of goods. मतलब गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है? 7,000. हमने जब परचेज किया, शेखर के पास से परचेज किया, we purchased at 20% trade discount. मतलब we purchased for 5,600, and the same goods are sold to Sagar at 10% trade discount. This 20% calculated on 7,000 and 10% also calculated on 7,000, which is the list price. Okay. This is a business. मतलब शेखर के पास से माल लिया और सागर को बेच दिया. हा बिझनेस आहे मित्रांनो. आपण काय केलं? शेखर कडनं 20% डिस्काउंट घेऊन माल खरेदी केला आणि तोच माल सागरला 10% लिस्ट प्राइसला डिस्काउंट देऊन विकून टाकला. मधल्यामध्ये आपला प्रॉफिट झाला ना. तो तर व्हायलाच पाहिजे. प्रॉफिटच नाही झाला, बिझनेस का करायचा? If there is no profit there, why to do business? Okay.
In simple words, we purchased the goods from Shekhar 5,600 and we sold the goods to Sagar 6,300. 6,300. तो पहले एंट्री आ गया परचेसेस टू शेखर 5,600 and सागर टू सेल 6,300. याची नरेशन सांगितली का नाही? 27 तारखेची नरेशन नसेल सांगितले तर लिहा. Being goods purchased at 20% trade discount. Goods purchased at 20% trade discount. आता 28 तारखेची नरेशन लिहा. Being goods sold at 10% trade discount on list price. Very important, on list price. This problem is very, very important, and if your teacher is really मतलब अगर कुछ डीप पे पढ़ाते हैं तो वो डेफिनेटली पूछेंगे आपको. चलो आता आपल्याला लेजर अकाउंट तयार करायचे. अकाउंट काउंट करा आपण. ओके, अकाउंट नंबर 1, then 2, then 3 and 4. पहिल्या एंट्री मध्ये 4 अकाउंट आले. then मोहन नंबर 5, स्टेशनरी नंबर 6, कैश ऑलरेडी आपल्याकडे, एडवर्टीजमेंट नंबर 7, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑलरेडी हमारे पास है, देव नंबर 8, then purchases number 9. Okay, Mohan already we are having. Mohan है, cash है, purchase है. Shekhar number 10, and here Sagar number 11 and sales number 12. So my dear friends, you need to prepare 12 accounts. 12 अकाउंट तयार करायचे. याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा, त्यातल्या त्यात मोठा अकाउंट कुठला असेल कॅश, बाकी सगळे छोटे. म्हणजे तुम्ही रुलिंग कसं करायचंय तुमच्या नोटबुक मध्ये ऐका. कैश अकाउंट यू शुड प्रिपेयर हैविंग 6 लाइन्स. ऐसे 6 लाइन्स होना चाहिए. एंड अदर अकाउंट यू प्रिपेयर विथ ओनली 4 लाइन्स. जास्त नको, 4 लाइन मध्ये करा. इन 2 पेजेस यू कैन मॅनेज. ओके ओके, आता आपण शांतपणे सगळ्यांनी रोलिंग करून घेऊ. पहिलं रोलिंग करून घेऊ and then we will continue with the next part. ओके, अभी आपको ये 2 प्रॉब्लम मतलब ये 12 अकाउंट बनाने हैं. फिर मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको लेजर अकाउंट हम लोग तैयार करने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स, तब तक आप लाइन मारते रहो. फिर नेक्स्ट सेशन जरूर देख लेना, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए